या गुड आफ्टरनून ऑल। कुछ बात किया है, थियरी याद है? वी आर इन A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बोल बोल जल्दी। वेरी गुड। परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होगा? एक्चुअल बेसिस। प्रोविजन कभी क्रिएट करने का? when it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue, तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बराबर है? ओके। उसके बाद रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम्स, इंसेंटिव्स याद है? ओके। फिर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अदर कॉस्ट। आई होप यू रिमेंबर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो सीधा। कल कितने किए? क्वेश्चन 1 किया है कि बाकी है? मतलब लास्ट के 2 किए थे ना? लास्ट के 2 किए ना, 13 14। ओके, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्लोजर बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद। हाफ पेज छोड़ा है ना उसके लिए, डिस्क्लोजर हाफ पेज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो अच्छे से। चलो मैं पढ़ूं? हाँ, कैसे सॉल्व करना है आई विल गाइड यू। क्वेश्चन 1 मैं करेगा, 2 आप खुद करेगा, इधर ही पैर में करेगा। हाँ, Messrs. Excellent Construction Company Limited undertook a construction contract for a building, construction of building for 3 crore. What is 3 crore? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं उसको। 3 करोड़ क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 करोड़। आगे, ऑन 1 सितंबर 2014 कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी हुआ? 1 सितंबर 14। 31 मार्च 15 इज अवर ईयर एंडिंग। ऑन 31 मार्च 15 मतलब 7 महीने के बाद कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट हाउ मच? व्हाट इज 1 करोड़ 80 लाख? दैट इज कॉस्ट इंकर्ड इन करंट ईयर। बराबर है? प्रूडेंट एस्टीमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन वाज 1 करोड़ 40 लाख। मतलब और कितना खर्चा होने वाला है आगे के साल में? तो बोलता है और 1 करोड़ 40 लाख का खर्चा होने वाला है। कितना करंट ईयर में कर दिया? 1 करोड़ 80 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया है, 1 करोड़ 40 लाख का और करने वाले हैं, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा? 3 करोड़ 20 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 3 करोड़। मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है तो प्रोविजन करना पड़ेगा। कितने का लॉस है? 20 लाख टोटल लॉस है। उसमें से करंट ईयर का जो लॉस रहेगा वो एक्चुअल लॉस रहेगा, और जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो एस्टिमेटेड लॉस रहेगा या एक्सपेक्टेड लॉस रहेगा। वो एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन होता है। ये लैंग्वेज समझा कि नहीं समझा? पक्का? आगे, what amount should be charged to revenue in the final accounts for the year ended 31st March 2015 as per the provision of AS7? अभी AS7 का क्वेश्चन करने के लिए मेरे को 3 इन्फो चाहिए। कौन सा 3 पता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड। 3 चाहिए। बोलो तीनों है क्या? है कि नहीं है? लिखो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हेडिंग लिखो, कंपनी का नाम क्या है?
मेसर्स एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, करेक्ट। अभी आंसर फ्रेम कैसे करना है, जस्ट चेक इट आउट, राइट डाउन। एज पर AS7 construction contracts as per AS7 construction contracts, comma, contract revenue should be recognized contract revenue should be recognized on percentage completion basis. And contract cost should be recognized on actual basis. Contract cost should be recognized on actual basis. ये समझा? Next line. When it is probable, that total contract cost will exceed total contract revenue, then provision should be made for expected losses. Provision should be made for expected losses, irrespective of commencement of work or stage of completion. Clear, everybody? सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ, उसमें थर्ड अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रेवेन्यू एंड अलग अलग कॉस्ट वी शुड आइडेंटिफाई. इफ वी कैन आइडेंटिफाई देन इट इज सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट. समझा? एक कंडीशन है वो सेगमेंटिंग का. एक मिनट, क्या लिखा समझा स्टोरी? क्या लिखा? एक बार रिपीट करो क्योंकि हर सम में ये लिखना पड़ेगा. क्या लिखा? As per AS7 construction contracts, contract revenue should be recognized on percentage completion basis, contract cost should be recognized on actual basis. फिर provision कभी create करेंगे? So when it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue, बराबर है? Then provision should be made. Provision should be created irrespective of work commencement, work is commenced or stage of completion. बराबर है?
इसके बाद क्या करने का पता है? ये लिखने का। बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर एवरीबॉडी? इसमें क्या क्या आएगा? क्या लिखा सबसे पहले? व्हाट इज अवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन दिस क्वेश्चन? बराबर है। Estimated cost to be incurred. How much? क्लियर? पहले क्या लिखने का? स्टोरी लिखने का, वो प्रोविजन लिखा, उसके बाद में 3 बेसिक इन्फो लिखने का। जैसे जैसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे ना, यू विल फाइंड वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। एक एक मिसिंग रहे, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, वी नीड टू फाइंड आउट दैट। इतना क्लियर? अभी क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट फॉर द contract revenue is to be recognized on what basis? So contract revenue credit side पे आएगा। थ्री करोड़ इंटू परसेंटेज फाइंड करने का। अग्री? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कौन से बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्चुअल बेसिस। अभी परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करते हैं। आ जाओ, वर्किंग नोट 1। कौन से मेथड से?
How much cost is already incurred? Total cost. परसेंटेज दो. 56.25 परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है हमारा. अग्री? बेटर. 56.25% वर्क इज कंप्लीटेड. My total revenue is 3 crore. Out of 3 crore, 56.25 crore we will recognize. How much? जीरो शू करवा करें. जीरो किन कहेगा? अरे 3 CR तो 3 into 6 56 125. 1 crore वही लिखा. 3 into 56.25%. जीरोस क्यों डालने का जरूरत है? वापस लिखने वाले भी नहीं है जीरो. हम तो रुपीज इन करोड़ लिख रहे हैं. जीरोस लिख रहा है. चलो गुड. एनीवे, यहाँ तक क्लियर. शैल आई प्रोसीड? सी इफ दे विल गिव यू फिगर्स इन करोड्स देन यू शुड राइट इन करोड़. मतलब जीरोस लिखा है तो जीरो लिखो, सीआर लिखा है सीआर लिखो. वो लोग ने कैसे लिख के दिया है वैसे मैं लिख रहा हूं. ऊपर लिख दो सीआर रुपीज इन करोड़. हाँ ठीक है, पॉइंट में आया तो कंफ्यूजन होता है, अग्री. बट वो लोग जैसे लिख के देते ऐसे लिख देने का बेटर है. अभी करोड़ जीरोस लिखने गया ना बेटा, 7 जीरो आएंगे. करेक्ट. और उसमें ये पॉइंट में आया तो और फंसेंगे फिर. पहले तो कैल्सी में गिनने का, उसमें फंसेगा. जीरोस में. चलो ठीक है, एक करेक्ट आंसर आना चाहिए. जीरो लिखो या मत लिखो. शैल आई प्रोसीड? या. So revenue is recognized. Now cost is recognized. We have to check whether there is a loss or there is a profit. If there is a loss, then we need to create provision. Agreed? So working one is over. Come to working note 2. Clear? Total contract cost. बोलो कितना है? 3 crore 20 lakhs. अपना प्रोविजन का लैंग्वेज क्या लिखा है मैंने? व्हेन इट इज प्रोबेबल व्हाट? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. ठीक है ना? ज्यादा क्या है? क्यों नेगेटिव में? फिगर पॉजिटिव ही बताएगा ना. इधर लॉस लिखेगा. लॉस नेगेटिव तो वापस प्रॉफिट हो जाएगा बेटा. ठीक है सर.
लॉस इधर लिख दिया तो ये 0.20 लॉस ही है ना। अभी लॉस को नेगेटिव में लिखेगा तो प्रॉफिट इंडिकेट होता है। बावरा हो गया तेरे को बेटा, जैसे लिखना है वैसे। 0.20 आया ना तेरे को, क्यों फेल रहा है? यहाँ तक क्लियर? घर से सोच के आया, दो डाउट तो पूछेगा। एक हो गया तेरा, बट इट वॉज इक्विवेलेंट टू 2। एनीवेज 0.20 तक क्लियर। हाँ, अभी ये 0.20 क्या है? दिस इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इतना लॉस होने वाला, इट इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस। नाउ चेक इट आउट, आउट ऑफ विच हाउ मच इज एक्चुअल लॉस ऑफ करंट ईयर, हाउ मच इज एक्चुअल लॉस ऑफ करंट ईयर। कैसे फाइंड करेंगे? नहीं, पीएनएल चेक करेंगे। पीएनएल चेक करो, रेवेन्यू कितना बुक किया है लो कैलसी पे? 1.6875 माइनस कॉस्ट कितना है 1.8, 0.1125 करोड़ का लॉस एक्चुअली करंट ईयर का लॉस है। इसका प्रोविजन नहीं करने का, बिकॉज ये एक्चुअल लॉस है। इतना करंट ईयर में लॉस हो चुका है। बाकी सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंस, this is my revenue, this is my income of current year, this is my expense of current year. Compare, you will get actual loss in P&L. 1.6875 minus 1.8. How much you got? 0.1125. What is 0.1125? करंट ईयर एक्चुअल लॉस। नाउ टोटल लॉस कितना है प्रोजेक्ट में? 20 लाख। बाकी का लॉस कौन से ईयर में होने वाला है? नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। एंड वो लॉस हमारे लिए कौन सा लॉस है? एक्सपेक्टेड लॉस। कैन आई से ये लॉस हमें अभी से पता है, पर है फ्यूचर का लॉस। तो एज पर कंजर्वेटिज्म वी हैव टू क्रिएट प्रोविजन। कितना आ रहा है? आंसर ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू वही प्राइस पे बुक हुआ। क्लियर? भी मेरे को आंसर दो। व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रोविजन? कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कितना? 0. कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है। कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल से बनेगा। नेक्स्ट ईयर ये प्रोविजन रिवर्स होगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में क्रेडिट में आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ क्लोज दिस। Close P&L, you will get net loss.
Done everybody? Clear? पक्का? That's it. ये P&L कंप्लीट हुआ. अभी ये P&L मैंने T फॉर्मेट में बनाया. इंस्टीट्यूट कभी कभी T बनाता है, कभी कभी वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है. Like contract revenue minus contract cost. So you will get contract revenue this much, contract cost this much, and then you will get loss of current year, then provision, so you will get the balance. Agreed? हमने अकाउंट बना के प्रेजेंट किया. It can be presented in T format, or I can say vertical format. Done? कौन सा क्वेश्चन का ये समझा कैसे करना है? पहले क्या लिखेंगे? पूरा प्रोविजन स्टोरी, उसके बाद बेसिक इन्फो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट P&L बनाओ. P&L में रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस एंड कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस. दो वर्किंग आएगा उसका, एक परसेंटेज कंप्लीशन वर्किंग विल कम, अदर प्रोविजन वर्किंग विल कम. डू यू अग्री विथ दिस? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व दिस क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन, solving same pattern. मैडम आप पीछे करोगे, you go beside it. April 2016, a construction contract for 1 crore 50 lakhs. 1 crore 50 lakhs, that is 150 lakhs, correct? Following particulars are extracted in respect of contract for the period ended 31st March 17. Agreed? Material issued कितना? लेबर पेड, ये सब कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, आएगा ना सब. कॉन्ट्रैक्ट पेनल डेबिट करेंगे. हेलो, आउट ऑफ मटेरियल इश्यूड, मटेरियल ये गन नहीं है जी, कैंसिल करो. मटेरियल अनयूज्ड, at the end of the period 4 lakh. What is that? Closing stock of material. क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम. मटेरियल इश्यूड दिया है ना 75 lakhs, उसमें से माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि उतना हमने यूज ही नहीं किया है. जितना कंज्यूम किया दैट इज अवर कॉस्ट. वी हैव कंज्यूम्ड ओनली 71 lakhs. We have not consumed 75 lakhs. So our cost is only 71 lakhs. Labor charges 2 lakh outstanding. 30%. It will be added to labor charges paid. Understood? It is estimated that by spending further 33 lakh 50,000, work will be completed in all respect. What is that 33 lakh 50? Estimated cost to be incurred. You are required to calculate profit of loss. अभी ये क्वेश्चन में क्या मिसिंग है पहले वो बोलो. रेवेन्यू तो ऊपर है, ये रहा रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज नॉट गिवन, वी विल कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट. डेफिनेटली एस्टिमेटेड इज गिवन, तो एक एक करके प्लस माइनस करने का. नहीं जो भी है, आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. करेक्ट? लिखो, प्रोविजन लिख दो. एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, contract revenue should be recognized on percentage completion basis and contract cost
should be recognized on actual basis. Clear? Next line. When it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue. Then provision should be made for expected loss. Provision should be made for expected loss, irrespective of commencement of work or stage of completion. Clear, everybody? आगे contract price, ₹1,50,00,000. सी लास्ट में 3 के बाद कॉमन, फिर सब में 222, लास्ट 3 है, 3 है, फिर सब में 22 के बाद कॉमन. Contract price. If you don't like commas, don't do commas. Oh, no problem. But you know now then how to write 1,50,00,000. Okay. 15 million. 15 million. Correct. Done? आगे कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट अभी यहाँ फाइंड करेंगे कि अकाउंट में डेबिट करूँ. इधर ही कर दें. कॉस्ट ब्रैकेट में क्या यही लिखते हैं. ब्रैकेट नहीं बेटा, ऐसे लिखेंगे. देखो मैं बताता हूँ. तो अकाउंट में बताना पड़ेगा. प्रेजेंट तो करना ही, टोटल कैसे फाइंड किया हो तो बताना ही पड़ेगा ना क्या क्या लिया. ये देखो बराबर है. अग्रीड.
टोटल बोलो। नेक्स्ट, क्लियर? अभी क्या बनेगा? अभी कर सकता है क्या? बोलो। हाँ, एक मिनट, एक डाउट है मेरे को। तीन इनको चाहिए था, तीनों आ गया ना? we wanted three information, we got all three, correct? Now you can prepare contract P&L and you can have two working notes. मेरे को एक सिर्फ डाउट है, उसका आंसर दे देना। What do you mean by this 4 lakh? Closing stock of material, मतलब first year, at the end of first year we have not used 4 lakh rupees of material. Do you agree? When it will be used? Okay, then why it is deducted in current year? It is not used in current year, so it is not current year expense. Do you agree? Hence it is deducted from current year material cost. Agreed? When it will be used? So it is which year expense? So ये 33,50,000 में ऐड करने का क्यों नहीं करना? तुमको समझा मैं क्या पूछ रहा है? This is estimated cost to be incurred in next year, no? So that 4 lakh is included in this, or we have to include? But you understood the question. पहले ये query तुमको आना चाहिए। Current year, current year is my first year. In first year I purchased material of 75 lakhs, out of which 71 lakh material is used in current year. 4 lakh will be carried forward to the next year, which will be utilized in next year. Understood? Now it is estimated that in next year we will incur 33,50,000 rupees expenditure. Does it include 4 lakh? कॉस्ट इंकर्ड एंड कॉस्ट पेड ये सेम होता है क्या अलग होता है? एक्सपेंस पेड एंड एक्सपेंस अक्रूड सेम होता है क्या अलग होता है? ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट। मैंने खरीदा करंट ईयर में, बट मैं ये मटेरियल यूज कभी करेगा? व्हेन आई एम गोइंग टू यूज नेक्स्ट ईयर, सो इट इज नेक्स्ट ईयर कॉस्ट। वी विल अज्यूम इट इज इंक्लूडेड इन 33,50,000. Alternate solution exists. If you are assuming it is not included in this, then answer will be 37,50,000. That is addition of 4 lakhs. So either way you can go. I am assuming what? लिखो ब्रैकेट में, assuming unused पहले इतना समझा कि नहीं समझा? अभी कैन यू प्रिपेयर दैट P&L? कैन यू प्रिपेयर वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2? कर सकता है? अभी कर दो कंप्लीट। चलो
We will go for working to. What is working to? We want to find out provision. अभी provision का language क्या था? When total contract cost. How much contract cost total? 1 crore 34 lakhs is actual plus 37 lakh 15. 1 crore 67 lakh 15. Agreed? Minus total contract revenue. सो मैं ये समझा क्या? स्टेप्स फॉलो करो. थर्टी थ्री है ये. ओके, ये करेक्ट. नाउ आउट ऑफ विच हाउ मच इज एक्चुअल लॉस? 14 lakhs. How did you get 14 lakhs? So 134 minus 120, Soumya. So you will get provision. How much provision? 3,50,000. This is expected loss, which is going to happen in future. For that we have to create provision. समझा? I hope you understood अभी. क्या मिस्टेक कर रहे थे वो समझा? Clear everybody? Without working, how will you find out provision? Balancing figure? No, whatever you are doing on calculator or in rough work, you have to show in fair. Because they will ask for it. ना नहीं तो कॉपी किया है ऐसा लगता है. ठीक है. If you have to show. That's it. Done everybody? Clear? Any doubt? पक्का? We are done with what? Question 3. अभी मैं ये पूरा डिटेल में रीड करेगा. यू हैव टू सॉल्व पूरा प्रोविजन लिख के मेरे साथ रहना. क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर कम ऑन Messrs Raj Construction Company. Contract price is how much? Manageable. Materials issued 21 lakhs. Material issued. We want issued or consumed? 21 lakh, out of which 4 lakh is still lying unused. क्या करेगा? हाँ, मतलब 17 lakh consumed. We will consider 17 lakh, 4 lakh will be deducted. Do you agree? Labor expenses 16 lakhs, out of which 1 lakh is what we will do? No, 16 lakh includes 1 lakh. Don't again add. It is already included. So 16 lakh is actual expenditure. It is not paid only. Last question में देखो क्या लिखा था? Labor charges, इसलिए outstanding add किया. Here labor expenses, and which is including outstanding 1 lakh. So don't add 1 lakh. Have you understood this? Specific contract cost कितना है? ऐड करेंगे. सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड. बोलो सब कॉन्ट्रैक्ट समझता है? डू यू नो सब कॉन्ट्रैक्ट? आई हैव टेकन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, हाँ परफेक्ट है. आई हैव टेकन 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो, बट फॉर बंगलो कंस्ट्रक्शन प्लम्बर का काम मैं नहीं करता. फॉर प्लम्बिंग आई हैव गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू समबडी एल्स. दैट इज कॉल्ड ए सब कॉन्ट्रैक्ट.
आउटसोर्सिंग, करेक्ट? या सो अभी एक मिनट, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में देगा तो मेरे को कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा ना उसका। आई हैव टू पे टू दैट थर्ड पार्टी फॉर प्लम्बिंग वर्क, यस और नो? या सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है? 7 lakhs. How much advance paid to contractor? That is irrelevant. How much is paid is not important. How much expenditure is incurred, that is important. ये समझा कि नहीं समझा? Further cost to be incurred. Further cost to be incurred मतलब estimated cost to be incurred in the future 35. You are required to एक मिनट, क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है? मतलब मीन्स परसेंटेज कंप्लीशन इज नॉट वर्किंग नाउ, इट इज अ फेयर पार्ट. फिर they are not asking you to have profit, they are asking you to calculate percentage completion, contract revenue and contract cost to be recognized. That's it. Write down, I will guide you how to write down. Can you write that story? Provision लिख दो पूरा, फिर मैं लिखवाता हूँ. Provision लिख दो, then I will dictate. लिखा प्रोविजन? Shall I proceed? Done? I hope you have written everything. उसके बाद लिखो. Basic info. Contract price, क्या लिखा? मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? अग्री. लेबर, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट,
सब कॉन्ट्रैक्ट कॉम, सेवन लैक्स। बरोबर है कितना? हाउ मच? सॉरी, डाउट है मेरे को, पूछ। 7 लाख इज अवर कॉस्ट, आउट ऑफ विच 4 लाख इज एडवांस। एडवांस इज टू बी इग्नोर। कितना पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मेरा खर्चा है वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। फर्दर कॉस्ट 35 लैक्स। अज्यूम क्या करेंगे बोलो? क्लियर। आगे बढ़े। क्या क्या पूछा है बोलो फर्स्ट? विच मेथड? अप टू डेट लेने का। ऑफ कोर्स। रेवेन्यू चेंज मतलब? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कितना? नहीं, रेवेन्यू था कितना? कितना बोलो? क्लियर। और क्या पूछा है?
कौन से बेसिस पे? बरोबर है। कितना एक्चुअल कॉस्ट? सिंपल। प्रॉफिट और लॉस पूछा है कि नहीं पूछा? नहीं पूछा, अदरवाइज पीएनएल बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? पक्का? Be specific with your answer. Whatever is the required part, be specific with it. Tell me, question 1, 2, 3, 4, something. Okay? Now we are going for different type of questions. एक मैं करेगा, एक आप करेगा. Now there is one contract, but information for 3 years are given. We are supposed to find out profit for 3 years. So read question 5. फेयर में मैं करवाएगा, करेक्ट? आप रीड करके मेरे को प्रॉफिट फाइंड करके दो रफ में. फेयर में आई विल गिव यू द आंसर. एक काम करो, परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करके दो बस. रफ में, फेयर में मैं करवाऊँ. फाइंड आउट परसेंटेज कंप्लीशन. Same. A construction contractor has a fixed price contract of 9,000 lakhs to build a bridge in 3 years of time frame. A summary of some of the financial data is as under: rupees in lakhs. Year 1, year 2, year 3. Initial amount for revenue agreed in contract. Can I say this contract price? Bolo. Variation is variation. Have you heard about variation? Variation is our revenue or not a revenue? Revenue. So first year में no variation. Second year there is a variation. Third year be same variation. So what is our contract price in first year? 9,000. Second year. Third year. This is total contract price. First year 9,000 lakhs था. Second year price has increased, so it is 9,200 lakhs. Third year also 9,200 lakhs. Do you agree with this? Contract cost incurred up to the reporting date. Up to reporting date. Up to first year, how much cost incurred? 2093. Up to second year, how much cost incurred? 6168. Up to third year, how much cost incurred? 8,100. Clear? Estimated profit for whole contract. Estimated profit is here. समझा कि नहीं समझा? 950,000. This star mark is given here. This 6168 includes what? 100 lakhs for standard material stored at the site to be used in year 3 to complete the work. Means 6168 में closing stock included है. Do you agree with this? बोलो. अभी मेरे को सोच समझ के बोलना. क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे कि माइनस? So from here we will deduct 100. Can I say that 100 is closing stock of material which is not used in second year, which will be used in third year? So in third year it will become cost. So cost of third year is how much? 8,100 double asterisk mark means which is not including 100 lakhs for standard material brought forward from year 2. तो इसमें 100 क्या करना पड़ेगा? Logically it should be included in third year cost ना. So they have not included. We will add it. Last दो सब में क्या assume किया था? It is already included. यहाँ पे बोला है it is excluded. Double asterisk mark पढ़ो. It is 8100 is excluding this 100 lakhs. Clear? Compute what? Year wise amount of फिर contract cost to profit or loss to be recognized in the P&L. That's it.
समझा नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। एज पर AS7 construction contracts contract revenue is recognized on percentage completion basis and contract cost is recognized on actual basis. समझा कि नहीं? स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? करेक्ट। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होता है? बराबर। रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पे पहले परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करना पड़ेगा। करेक्ट। हाउ टू फाइंड आउट? बी विथ मी। कितना था फर्स्ट ईयर? कितना क्लियर? बराबर है 2093। क्लियर एवरीबॉडी? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकम।
एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है क्या मिसिंग है? बट इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या दिया है? बोलो कितना ये बैलेंसिंग फिगर आएगा? कैसे फाइंड करने का? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस माइनस दिस, टू वन क्लियर। मैनेजेबल। अभी क्या फाइंड करेंगे? बराबर है कितना कॉस्ट इनकर्ड? बोलो कितना परसेंट? समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी क्लियर? ये क्यों बनाया मैंने टेबल? टू डिटरमाइन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगा तो अपना कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बैठेगा ना। कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट के लिए मेरे को एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड चाहिए। फॉर एस्टिमेटेड कॉस्ट आई हैव प्रिपेयर दिस टेबल। क्लियर? आगे कॉन्ट्रैक्ट
कितना आ रहा है? सिक्स एट इंडियन कैल्सी यूज कर, चाइनीज क्या थी? क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक हो गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अभी क्या फाइंड करना है? ईयर वाइज रेवेन्यू पूछा था ना, वो हो गया। एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट भी टेबल में आ गया ऊपर, एक्सपेंस भी आया। क्या फाइंड करेंगे अभी? प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया तो है, कैसे लॉस रहेगा? एक मिनट, इधर तक समझा? अभी प्रॉफिट और लॉस फाइंड कैसे करेंगे? वी विल कंपेयर व्हाट? नहीं, वी विल कंपेयर व्हाट? कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोलो। ईयर वन का कितना है? ऊपर ही फाइंड किया ना अभी, ये क्यूमुलेटिव है। क्या है? क्यूमुलेटिव। अप टू 1 ईयर रेवेन्यू 2340, अप टू 2 ईयर्स कितना है? अप टू 3 ईयर्स माइनस ये समझा? क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट incurred up to date, up to date मतलब cumulative, therefore up to date मतलब
cumulative. करो माइनस, $740 and what is 247? Contract profit of first year. What is 740? What is contract profit up to 2 years? Can I say 740 includes first year profit also? So we have to deduct. Clear? First year profit 247 for and this much profit is recognized. ये समझा के नहीं? Have you understood both the tables? First table we prepare to determine how much contract revenue will be recognized after calculating percentage of work completion. सच बोलो, क्लियर है? Instead of estimated cost to be incurred, they had given estimated profit. So this was balancing figure. That was the important part. I hope you understood this part. Question number 6. Solve करो. ये रहा ना एक्सपेंस. Contract cost incurred. Solve question number 6. Start करो. Check, wait. Escalation का क्या किया वो? Uday Constructions undertake to construct a bridge for the government of Uttar Pradesh. The construction commenced during the financial year ending 31st March 16. Is likely to be completed by the next financial year. समझा कि नहीं समझा? The contract is for fixed price 12 crores with an escalation clause. What is 12 crores? With escalation मतलब ये बढ़ सकता है due to inflation in material or labor cost. The cost to complete the whole contract estimated was 9.50 crore. You are given the following information for the year ended 31st March 16. Cost incurred up to 31st March 16 was 4 crore. Cost estimated to complete the contract was 6 crore. समझ रहा है? Everybody? So current year cost incurred 4 crore. Cost estimated to complete the contract 6 crore. Escalation in cost by बोलो. Correct? Accordingly, contract price is increased by 5%.
you are required to ascertain the percentage of completion and the revenue and profit to be recognized. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ एस्केलेशन इज द न्यू एरिया। एस्केलेशन का क्या है? 4 करोड़ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ओके, 4 करोड़ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 4 करोड़ इज ऑलरेडी इंकर्ड विच इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइस। 6 करोड़ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या अज्यूम करेंगे बेटा? पर आप सोचो ना, नहीं नहीं एक सेकेंड, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड मतलब क्या? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, यू हैव ऑलरेडी इंकर्ड 4 करोड़। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर एस्टिमेटिंग दैट फर्दर 6 करोड़ विल बी इंकर्ड। तो फर्दर 6 करोड़ में इन्फ्लेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? यू विल कंसिडर और यू विल नॉट कंसिडर? ऑब्वियसली कंसिडर। तो 6 करोड़ में भी है इन्फ्लेशन कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो 4 करोड़ is already inflated price which is incurred by us. 6 crore which I am estimating, that is always definitely inflated price estimated, no doubt about it. In other words, escalation percentage should not be considered in contract cost because it is already included. Escalation percentage will be applied only in contract revenue because revenue was decided at the beginning. Cost is actual, which is inflated cost. Cost is estimated, so I will estimate at the end of first year, so it is always inflated cost. So one single liner you should remember. What was that? Escalation is applicable to revenue, not to the cost, because cost actual है, it is already inflated. गया कि गया? पक्का? अभी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रहेगा? 12 करोड़ था ना, प्लस 5%, 12.60। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड 4 करोड़, एस्टिमेटेड कॉस्ट 6 करोड़, दैट्स इट। अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना। पहले कॉस्ट कितना एस्टिमेट किया था? वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या 9.5 करोड़ का खर्चा होएगा? बट हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट यू हैव इंकर्ड इन फर्स्ट ईयर? 4 करोड़ and 6 crore estimated to be incurred, so 10 crore. Can I say it is inflated? Yes. अरे बेटा, अरे ये एस्केलेशन कॉस्ट बाय 5% है, एस्टिमेटेड है कि इतना भाव बढ़ा रहेगा 5%। तो वो लोग का 10 करोड़ क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा बहुत एक्चुअली खर्चा अलग ही रहेगा ना बेटा। एक्चुअली कितना इनकर किया है, तो दैट विल नॉट बी मतलब एक्यूरेट 5% रहेगा। वो जो भी इनकर किया है, इट सीम्स बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 5%, आई विल ऐड 5% इन रेवेन्यू। कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ दैट। मे बी मटेरियल में 6% रहेगा, लेबर में 4% रहेगा, वी डोंट नो। ऑन एन एवरेज इट इज 5%। और कॉस्ट में ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट खर्चा होने के बाद का, वो इन्फ्लेशन होने के बाद का कॉस्ट है। वो 9.5 करोड़ का एस्टिमेटेड था, ऑलरेडी 10 करोड़ हो गया है, मींस इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी कंसिडर। अभी मैं कितना चार्ज करेगा उसको? तो आई विल चार्ज 5%। आई एम फाइंडिंग इट 5% इंक्रीज, आई एम चार्जिंग 5% ऑफ द रेवेन्यू। तो इधर देख 50 लाख का इंक्रीमेंट है ना, मैं इसमें भी तो खाएगा थोड़ा पैसा। आई विल चार्ज 60 लाख, 0.6 करोड़। समझ रहे तेरे को? बिकॉज एस्केलेशन ऑलवेज परसेंटेज फॉर्म में स्टेट होता है। अग्रीड? या राइट डाउन क्विकली लिखो। उदय कंस्ट्रक्शन, हेडिंग दो, उदय कंस्ट्रक्शन।
Next line, as per AS7, construction contracts, contract revenue should be recognized on percentage completion basis and contract cost should be recognized on actual basis. समझा के नहीं everybody? प्रोविजन नहीं लिखना, क्यों? प्रॉफिट है, दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12.60 जाएगा, कॉस्ट तो 10 करोड़ ही है, तो नो नीड टू राइट डाउन बेसिक इन्फो. 12.60 CR. लॉस होएगा तभी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है कि लॉस है आप ही चेक करो. 12.60 का रेवेन्यू है, 10 करोड़ का टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट दिख रहा है. लिखने का है तो लिख देने का, क्योंकि वो व्हेन इट इज प्रोबेबल लिख रहा है ना, ऐसे दिया करेक्ट. यू कैन राइट इफ यू वांट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट कितना है बोलो? एस्टिमेटेड कॉस्ट करो, सच बोलो, इधर तक समझा दो. 3 बेसिक इनको मिल गया, यू गॉट 3 इंफॉर्मेशन करेक्ट. अभी क्या बनाएंगे बोलो? पीएनएल करूँ क्या वर्टिकल करूँ? वर्टिकल करेंगे, लिखना है बोलो. कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, $12.60 इंटू परसेंटेज कंप्लीशन आएगा, बरोबर है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. अभी परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करना है.
कितना कॉस्ट? बराबर है, इसका 40% निकाल। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? Have you understood? पक्का? इन शॉर्ट एस्केलेशन किसको लगेगा? रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉस्ट को नहीं, बिकॉज कॉस्ट इज इन्फ्लेटेड कॉस्ट। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8, रिजल्ट का डेट आया क्या? थिंक अबाउट इट। ये 8 के बाद कितने 4 क्वेश्चन बचेंगे? क्यों 5? 13 14 तो हो गया है ना? क्यों 3? 9 10 11 12 बेटा। ये 4 क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करके आओ। करेगा नहीं करेगा? This 4 questions you have to try it. We will definitely solve in next lecture. All 4 are very important. तो तुम घर पे अगर ट्राई किया है ना तो यहाँ पे आप क्रैक कर पाए। एस्केलेशन है, मेरे को तो दिख रहा है थोड़ा। मैंने इधर अमाउंट दिया है ना सीधा। I will read this question. Good question. Find क्या करना है? मतलब परसेंटेज कंप्लीशन एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। करेक्ट? RT Enterprises has entered into a fixed price contract. You understood this? For construction of a tower with its customer. Okay. Initial tender price was agreed at 220 crore. At the start of the contract, it is estimated that total cost to be incurred was, beginning में estimate किया 200 करोड़ का expense होगा. At the end of year 1, this estimate stands revised to 202 crore. Can I say inflation? Assuming that the construction is expected to be completed in 3 years. During year 2, customer has requested for a variation in the contract.
As a result of that, the total contract value will increase by 5 crore. पहले कितना था? 220 था, बोलो. अब इससे 5 करोड़ हम बढ़ाना पड़ेगा because of variation. So what is our contract price? 225. And the cost will increase by 3 crore. Okay, what ठीक है. Cost will increase by 3 crore. It is always inflated. It is always included. Again, RT has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to the total estimated cost. And contract cost incurred at the end of each year is 52.52 crore, year 2 154.20 and year 3 205 crore. ये समझा कि नहीं समझा? It includes what? Unused material. तो इसमें unused material include है. क्या करेंगे? माइनस करेंगे. और फिर थर्ड ईयर में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज 205 टोटल कॉस्ट है. करेक्ट. सो इंक्लूड नहीं, थर्ड ईयर में ऐड नहीं करेंगे. क्या अज्यूम करेंगे हम लोग? इट इज इंक्लूडेड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड प्रॉफिट. आराम से मैं करवाऊंगा. लिखो. एज पर AS7, एज पर AS7, construction contracts, contract revenue should be recognized on percentage completion basis. And contract cost should be recognized on actual basis. क्या फाइंड करेंगे? Stage of completion. Rupees in crores. आगे बढ़ो. Everybody. How to find out stage of completion? पहले क्या चाहिए मेरे को? Cost incurred up to date. ईयर 1 कितना है? ईयर 2,
हाउ मच? पॉइंट 205. टोटल कॉस्ट बोलो, फर्स्ट ईयर में टोटल कितना कॉस्ट था? परफेक्ट बोला। फिर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय, कम ऑन, ये पॉइंट समझ। अभी परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करो। बोलो। समझा? परसेंटेज कंप्लीशन क्लियर? व्हाट इज अवर सेकेंड रिक्वायर्ड पार्ट? ये क्या था? ओ, दो इधर। कोई आता है क्या रूम पे? ठीक है। पर्टिकुलर्स रूम पे नहीं होता है। वी स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग इज ऑन। मीटिंग आईडी इधर आने के बाद फिर चाहिए। एक ही सेम ही आईडी है ना हर लेक्चर में, क्लासरूम सेम है तो आईडी सेम रहेगा। जो पहले भेजा रहेगा ना एक बार, वही आईडी पे रहेगा। मेरे पास नहीं रहेगा, इधर देखना पड़ेगा फिर चेक जाने के टाइम में। नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, 2-3 लेक्चर के बाद। नेक्स्ट लेक्चर आएगी नहीं, नहीं तो वो। हाँ, आज लास्ट लेक्चर है। अब बोले तो खत्म कर दूँ। 4 सम होमवर्क करो और क्या, सोल्यूशन के लिए मैसेज नहीं करना बस। पर हाँ, आगे बढ़े। आप बोलो करवाना, करना है ना वो 4 सम? नहीं, होमवर्क में ट्राई बेटा, नहीं आएगा आंसर। होमवर्क नहीं करना है मतलब करवाना है ना, इधर घुमा मत। पहले नहीं बोलता है, फिर बोलता है नहीं 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 होमवर्क नहीं करना, इधर करना है। अभी ये क्या हो रहा है मालूम है? मस्त क्या टेक्निक है, जोरदार। कि सर और 5 मिनट आप थोड़ा टाइम पास करो, नहीं तो और एक कम हो जाएगा। करेक्ट, वेल डन मोनेल, लगे रहो।
एनीवे ये आंसर दो, प्रॉफिट और लॉस फाइंड कैसे करें? नहीं, ये ईयर वाइज फाइंड करना है। वाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, भी आराम से मेरे साथ रहना, माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेफिनेटली, पर मेरे साथ रहना, बी विथ मी। ईयर वन में व्हाट वाज अवर रेवेन्यू? 220 crore into 26%, परसेंटेज वर्क कंप्लीशन 26 है ना, 57 पॉइंट। सच बोलो, ये समझा के अभी बोलो, सेकेंड ईयर में वेरिएशन आया कि नहीं आया? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना हो गया? कितना? फिर 100। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ये कौन से बेसिस पे है? बराबर माइनस फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 52 पॉइंट 4.68। ये क्यूमुलेटिव है ना, इंडिपेंडेंट करना है, इंडिपेंडेंट भी कर सकता है। एंड इधर सेकेंड ईयर बोलो। सच बोलो समझा के। अभी घर जाना है, हाँ ही बोलेंगे, थोड़ी ना बोलेंगे तो। ए बट हैव यू अंडरस्टूड पक्का? ये कितना हुआ? 8 सम हुआ। 9th वाला है ना, डेडली क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है मालूम? एक बार जरा पढ़ के तो देखो। रेवेन्यू फाइंड करना। क्वेश्चन 10 में 1 और 2 पार्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ 4, so you try at home. 11th you will understand fully, 12th you can understand fully. So 11th and 12th में I am not worried, but the important is 9th and 10th. 11th 12th तो 15 मिनट में हो जाएगा।
9th 10th will take 1 hour. So next lecture 1.5 hour may we will complete this standard. Have you understood everything? Pakka? Done? Thank you very much. See you in next lecture. Bye. Take care.